Good evening, ladies and gentlemen. And as I always say, back in the days, the transport industry was gentlemen and gentlemen, but now it is ladies and gentlemen. दोस्तों, हम जब हीरो की बात करते हैं, आप किसी से भी पूछो, किसी यंगस्टर से पूछो, हीरो, सलमान खान, आमिर खान, कोई और नाम आएगा. लेकिन हम अगर रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें, हमारे जो हीरो हैं, जो हमारे असली हीरो हैं, वो इस टेबल पे बैठे हैं. दोस्तों, एक बार तालियां इस टेबल के लिए. मैं आपको 30 सेकंड में एक ट्रक ड्राइवर की अहमियत बता देता हूं. आपके टेबल पे या आपके सामने कोई भी एक चीज हो, उसे हाथ में उठा के ऊपर करिए. कोई भी चीज हो आपके हाथ में, ग्लास हो, फोन हो, बॉटल हो, कुछ भी हो, उठा के ऊपर कीजिए. मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक ट्रक में बैठकर आपके हाथ तक पहुंची हैं. ये है रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और ट्रक ड्राइवर की अहमियत. दोस्तों, जब कोविड का वक्त था, हम सब जानते हैं, लोग भाग रहे थे दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए. जब हमारी बात हुई तो लोगों ने कहा ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है, जो ट्रक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं उनकी भी कमी नहीं है. अगर कमी थी तो ट्रेन्ड ट्रक ड्राइवर्स की. और उस वक्त लॉजिस्टिक्स स्किल काउंसिल ने रातों रात बहुत ही मेहनत करके ट्रक ड्राइवर्स को ट्रेन किया ऑक्सीजन के ट्रक चलाने के लिए. आज हमारे साथ लॉजिस्टिक्स स्किल काउंसिल से हैं रविकांत यमार्थी जी, सीईओ लॉजिस्टिक्स स्किल काउंसिल. मैं उनका स्वागत करता हूं पैनल पे. मार्थी जी, योर सीट प्लीज. दोस्तों, रेवंकर जी ने हमें श्रीराम के बारे में बहुत कुछ बताया. उनको शायद याद होगा, आज से बहुत साल पहले जब CSR वर्ड शायद शुरू भी नहीं हुआ था, तब श्रीराम एक प्रोग्राम करती थी, ट्रक उत्सव, जो ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक ओनर्स के लिए था. आपको जानकर हैरानी होगी, वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स आते थे अपने फैमिलीज़ के साथ, बीवी बच्चों के साथ, और तादाद होती थी हज़ारों में. 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम होता था और सब मिलकर ट्रक ड्राइवर्स का ख्याल रखते थे. हमारे साथ श्रीराम फाइनेंस से आज है बालमुरुगन थेवर जी, जो डायरेक्टर सेल्स एंड CSR हेड है श्रीराम फाइनेंस. योर सीट. दोस्तों, रेवंकर जी ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि हर ट्रक ड्राइवर उनके लिए एक ट्रक ओनर है. हमारे साथ पैनल पर एक ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जिन्होंने अपने ड्राइवर्स को ओनर भी बनाया है और उनको काम देने के अलावा साथ ही साथ उन्हें बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं. मैं इनवाइट करता हूं चिराग कटीरा, डायरेक्टर CNGT ग्रुप ऑफ कंपनीज का. चिराग. दोस्तों, सिंस हम बात कर रहे थे ड्राइवर ट्रेनिंग की, मैं रविकांत जी से पूछना चाहूंगा. रविकांत जी, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू अ ट्रक ड्राइवर? हाउ क्रूशियल इज दैट? Thank you, and thanks Shriram for inviting me and giving this opportunity to brief about what all we did in the skilling. So answering your question, it's very, very important because when we did a survey, approximately about 95% of the truck drivers have learned the driving informally. So because sir was talking about trailer, driving a trailer, trust me, in India we have hardly any training institutions which impart truck trailer driving training on that. So it becomes very, very important for the driver to formally learn driving because he is informally come into the segment, so that he understands, because one of the drivers was speaking that road has its own language and they need to understand that language, and that's exactly what we train them on. And the core focus of this entire thing is to minimize the road accidents. So that's exactly what we had been doing. Bala, coming to you, besides a driver will learn training, जैसा हम सब जानते हैं, वो अपने उस्ताद से सीखता है ड्राइविंग. बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, what was the mindset of Shriram when it said we will take care of the driver's health, we will take care of the driver's children? What was the thought process there? As Umesh sir has already mentioned, we have been into the pre-owned truck business, and we address to the driver community
whom we wanted to become a owner, who graduates to become an owner. But his priority is to earn for his family, where he forgets about his children's upscaling and education. That is where we thought that we should help him to have a better life for their family. So education, children's scholarship became very, very crucial. The second part is the drivers don't bother about their health. They don't know how to take rest. They do not know the basic hygienes. So we started this 20 years back with 2 mobile van going to the truck terminal and making an awareness and making them understand how important their health is. So there was a lot of, resistance from the driver's side. They don't want to, first of all, check. But in today's scenario, the truckers also are very, very aware. And we have mobile vans which is going to the truck terminal. We have 16 mobile vans across the country. Each mobile van goes to the truck terminal, and each mobile van goes 22 locations in a month. And we are trying to create awareness. We are trying to do a pre-health checkup, also counseling them about the do's and don'ts. There are so many things. And when we see that, there are drivers, there are 99% of the driver who have never visited a clinic or an hospital. That is surprising to us. And we say how important is health is. So that is where we felt that it is time for Shriram to give back to the community. So that's how we started this activity. That is a wonderful initiative. दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हम ट्रक ड्राइवर शॉर्टेज की जब बात करते हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब ड्राइवर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ ग्लोबल फिनोमिनन ऑफ सॉर्ट्स. एंड आज आप अगर देखोगे कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो या ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, एक ट्रक ड्राइवर उसके हर एक मुहिम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. चिराग, आपके कंपनी में ट्रक ड्राइवर्स के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं टू मेक श्योर ही इज़ मोटिवेटेड टू ड्राइव एंड देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑल्सो? सबसे बड़ा इनिशिएटिव और सबसे पहला चीज़ प्रथम मैं जिसको कहूँगा कि हमारे यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स को सारथी माना जाता है. जैसे कि हम सभी को महाभारत पता होगी, तो महाभारत जब पांडव जीत क्यों पाए? बिकॉज उनके पास अच्छा सारथी था. सो जितने भी सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ है, आई एम वेरी श्योर इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स. सो हमारे यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स को हम लोग सारथी, और हमारा D2D पॉलिसी चलता है, डायरेक्टर्स एंड ड्राइवर्स ऑल आर सेम. सो रिस्पेक्ट में, डिग्निटी में कोई फ़र्क नहीं है. ड्राइवर, हम यहाँ पे ड्राइवर कह रहे हैं, सो हमारे सारथी कभी भी हमारे ऑफिस में आ सकते हैं. वी हैव लाइक कभी भी कॉल कर सकते हैं. इंटरेक्शन बहुत अच्छा है. और दूसरा, हम लोग ने हमारे जितने भी गोडाउन्स हैं, सो वी हैव 88 लोकेशंस इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, और हमारे सारे के सारे लोकेशंस पे ड्राइवर्स के लिए हब बनाया गया है. प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ है. इनफैक्ट दूसरे ट्रांसपोर्टर्स के ड्राइवर भी हमारे हब पे आके फ्रेशन अप होते हैं. एंड उसके बाद हमारा ये बिलीफ है कि ड्राइवर है वो एक्चुअली द शो, ही इज़ ओनली रनिंग द शो. सो दे आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, आई वुड से. जैसे कि राइटली यू सेड कि एवरी टैंजिबल विजिबल थिंग नीड्स अ ट्रांसपोर्ट, बट वो ट्रांसपोर्ट चला कौन रहा है? ट्रक्स चला कौन रहा है? वो चला रहे. हम लोग तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं AC ऑफिस में बैठ के. दे आर द रियल हीरोज़. सो राइटली सेड के हाईवे हीरोज़ है और वो लोग मैनेज करें. इसके लिए वी बिलीव के SNGT है, हम लोग है, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ड्राइवर्स. Ravikant, besides training, when drivers come to you for training, what are the critical deficiencies you see in them? What do you think is missing in a truck driver? See, we generally prepare something called as a qualification pack, and that becomes a basis document for assessing what are the skill gaps. So when we actually assess the skill gaps, first thing that we would want to train them would clearly come out is on the defensive driving, number 1. Number 2, on the fuel saving way of driving. Number 2, maintaining the vehicle. Number 3, the maintaining vehicle. So these are some of the things which come out very clearly in terms of that, since they have learnt this informally, when we do an assessment to assess the skill gaps, so these are the 3 major components which come in. So we do 3 trainings. 1, we create a pipeline where we bring in people who are LMV and convert them to HMV by training. We bring in HMV drivers, and we also do an upskilling
either give them a specialization to drive an ODC truck or a LMV tanker sort of. But majority of the skill gaps that we identify would fall under these three, either maintenance of the vehicle, saving the fuel while they're driving, or defensive driving techniques. So these are the three major gaps. दोस्तों ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ अगर आप देखें पिछले 10 सालों में बहुत चेंज हुआ है। ट्रक्स आपके बेटर हो गए हैं, अब एसी कैबिन्स भी आ गए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर हो चुका है। लेकिन एक चीज़ की जो कमी आज भी है वो मेरे हिसाब से वो है एक रिस्पेक्ट। माला, हाउ डू वी एड्रेस दिस? आई मीन श्रीराम, मैं जब श्रीराम से बात करता हूँ बहुत सालों पहले भी, श्रीराम हमेशा कहता था हमको ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक ओनर्स पे पूरा भरोसा है। ये शायद पहली कंपनी थी आपने ट्रक ड्राइवर्स को क्रेडिट कार्ड दिया था, जब किसी को शायद कोई लोन भी नहीं देता था आपने उनको क्रेडिट कार्ड दिया। व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू मेक देयर लाइव्स इवन बेटर? सी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हमारे ट्रक ड्राइवर लोगों की पढ़ाई नहीं होती है। मेजर ट्रक ड्राइवर्स, चिराग विल एग्री विथ मी, आर आइदर 8th fail, 7th pass or 9th fail or whatever. So the first thing which we thought was to how do we make him feel proud, even in front of their children. You must have addressed, the last event which we did in Mumbai. There was one actress who came and addressed the truck driver. She said her father was a truck driver, but in the school and college she never mentioned that her father was a truck driver because she was feeling, and she cried in the stage and said, I'm so proud today because he made me something. So today what we are doing for that is we are certifying through Logistics Skill Council a certificate which puts the driver into 12th pass. So we have trained 1,12,000 drivers and we have certified them to be the skilled driver with the Logistics Skill Council certificate. So that is where we are very, very different from others. So it's not just giving training, we also have to see what is the benefit which he gains. So the second important thing of that certificate is, once he gets the certificate and when he goes for his renewal, today the government has come with an amendment that any heavy truck driver, if he wants to go for a renewal, he has to go and complete 5 hours of his training from a training institute. But in India, we don't have a truck training institute, for your information. There is hardly 8 or 9 in this country. So this certificate gives him an access to renewal his driver license without going to any institute. So simple things, but which is beneficial to the driver. So there are a lot of other things which we are doing. We don't highlight, or we don't make it a big thing, but we work slowly and we work very closely with the truck driver community and we work for their ecosystem. I just want to add one more thing because it's very important. You mentioned that when there was a shortage of truck driver for the oxygen cylinder, and when LSE took the initiative, Shriram was the only company, I can say, who trained 1,400 drivers for carrying that explosive, and this was very, very important and it was very crucial, and those drivers are listed in the national list. Anytime such crises come, those drivers can be called on. So these are the small things which we do, which is in the interest of the nation. So, and I think most important, I think I answered your. Yes, and I think most important is Shriram has been very consistent with whatever it does. More than consistent, it is our passion. Passion, because absolutely. we work for the trucking community. We want to see them also being proud. So if you travel internationally anywhere, the truck drivers are equivalent and they sit and eat with you. So we want to bring that kind of pride to the driver. So we continuously try and see how we can make it possible. So Shriram alone cannot do it. So we also talk to a lot of manufacturers. In fact, we had a meeting with Bharatvarsh. They said, Bala, whatever you want, you tell me, we are ready to do. So there are small things. And we also work with a lot of oil companies, which is showing a lot of interest. But the question is, who will run it? Who will initiate it? So Chirag will agree if I'm pointing. I'm sure. And since you spoke about COVID, दोस्तों आप लोग का याद होगा जब लॉकडाउन हुआ था 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक हम में से कोई भी घर के बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन 140 करोड़ की आबादी में कोई भूखा नहीं मरा था,
सबके घर पे सामान पहुंचा था और जो हाईवेज पर सबसे ज़्यादा तादाद में लोग थे वो थे ट्रक ड्राइवर्स। तो आई थिंक वी नीड टू अपलॉड, एक बार तालियां बजनी चाहिए उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर, जब हम लोग घर पे छुपकर बैठे थे, हम कहीं नहीं जा रहे थे, वे हाथ धोना है, खाने का सामान को नहीं छूना है, वो हाईवेज पर थे। सलाम है आप लोगों की बहादुरी को। विदाउट, यस कपूर साहब बिल्कुल ठीक करें, विदाउट एनी फैसिलिटीज। इनफैक्ट चिराग इस बारे में बताएंगे, ड्राइवर्स को उस वक्त खाना भी नहीं मिल रहा था क्योंकि ढाबे बंद थे उस वक्त। तो एसोसिएशंस ने मिलकर कोशिश की कि कुछ तो कुछ उनको सामान दे सके। चिराग, उस वक्त के इनिशिएटिव्स क्या थे? कैन यू जस्ट रन अस थ्रू दैट? सो दैट टाइम आई वाज अ नेशनल प्रोजेक्ट हेड ऑफ एएमटीसी एंड वो टाइम पे हमने जैसे बाला सर हो गए, बाद में अलग अलग OEMs हो गए, ऑल मार्केटिंग कंपनीज हो गई, हमने सबको अप्रोच किया एंड कहीं ना कहीं हमें सब जगह से सपोर्ट मिला। बट जितना भी सपोर्ट मिला हमारे लिए काफ़ी कम था, बिकॉज इंडिया में 1 करोड़ ट्रक्स आर रनिंग ऑन द रोड्स और जिस हिसाब से क्राइसिस था वो हिसाब से एटलीस्ट 30 लाख ट्रक्स का ज़रूरत था। एंड कहीं ना कहीं 30 लाख ड्राइवर्स आ भी गए। कोई भी ड्राइवर, काफ़ी सारे ड्राइवर्स गांव जाके वह भी रिटर्न आ गए, बिकॉज समवेयर दे थॉट के देश को हमारी ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी के सारे ड्राइवर्स रिटर्न आ गए, वो बाकी ट्रांसपोर्ट कंपनीज में ड्राइवर्स आ गए, बट फिर भी ढाबे बंद थे। कहीं ना कहीं हमें अलग अलग कंपनियों से हेल्प मिली, बट स्टिल ओनली 10 लाख ड्राइवर्स वेर फेड, बाकी 20 लाख ड्राइवर्स वेर ऑन देयर ओन। बट ऑक्सीजन कहीं भी नहीं रुका, दवाइयाँ कहीं भी नहीं रुकी, और उन्होंने वो टाइम पे जो ब्रेवरी दिखाई, इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये जो नाम है हाईवे हीरोज़, वो एक्चुअली में वो डिज़र्व करते हैं, वो डिग्निटी वो डिज़र्व करते हैं। बिकॉज ये समय वैसा था कि मुझे अभी भी याद है कि मैं खुद भी मतलब कि मेरे घर वालों को नहीं मिल रहा था, बिकॉज आई वॉज लुकिंग आफ्टर द ऑपरेशंस। तो ऐसे फादर एंड सन एक दूसरे को मिलने से डर रहे थे, पर हमारे जाबाज ये हाईवे हीरोज़ हॉस्पिटलों में जा रहे थे, कोविड सेंटर में जा रहे थे, जहाँ बोलो वहाँ जा रहे थे, ग्रॉसरीज भी बिंदास, मतलब उनको डर ही नहीं था। ऐसे लग रहा था कि अलग ही पावर उनमें आ गया है। और आपने देखा होगा किस तरीके से इंडिया, जो हमारी कंट्री, किस तरीके से स्मूथली या टफ टाइम से निकल पाई। एक्चुअली लोगों ने रियलाइज नहीं किया कि उस वक्त चल क्या रहा है। दोस्तों, एक भी घर में कहीं भी कम्युनिटी, हम ई-कॉमर्स से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब जगह से मंगा रहे हैं, वो ट्रक ड्राइवर ही था जो सब जगह पहुंचा रहा था। चिराग, व्हेन वी टॉक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ड्राइवर को मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए उनकी सैलरीज भी बढ़ानी पड़ रही है, उनको पर्क्स भी देने पड़ रहे हैं। हाउ डू यू मैनेज दिस? हाउ इज़ द बैलेंस? सो सबसे पहले तो हमें हमारी इंडस्ट्री का नॉर्म चेंज करना पड़ेगा। जैसे ट्रांसपोर्ट में एक बहुत रॉन्ग नॉर्म चल रहा है अभी कि ड्राइवर को सैलरी बहुत कम देते हैं हम लोग, और ड्राइवर को पैसा दिया जाता है नंबर ऑफ डेज ही इज़ ऑन द ट्रक, वी कॉल इज भत्ता। ड्राइवर का एवरेज सैलरी बहुत कम होता है, और भत्ता जैसे कि जितना दिन वो ट्रक पे है वो हिसाब से उसका पे स्केल होता है। इनफैक्ट मेरा और बाला सर का उसी पे बात भी चल रहा था कुछ घंटों पहले। तो हमें ये नॉर्म को चेंज करना होगा। हमें कहीं ना कहीं ड्राइवर को, बिकॉज एवरेजली ड्राइवर इज मेकिंग अराउंड 30 to 35,000, बट इट कैन बी easily transformed into salary, which will again become a fixed cost to us, and this will attract lot of youth to be a part of the industry. अभी क्या हो रहा है कि सैलरी 12,000 रुपये है, भत्ता अलग से मिलता है, इंसेंटिव्स अलग से होते हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ 19-20 हो जाता है। सो आई बिलीव कि अगर जो उसको प्रॉपरली 35 to 40,000 रुपीज़ सैलरी दिया जाए, प्रॉपरली उसको हमारी कॉस्ट में भी ऐड किया जाए, then definitely the youth will be a part of it. And see, I'll tell you what, ड्राइवर का सैलरी इज़ नॉट अ कॉस्ट टू अस टेक्निकली। ये एक हमारा सिस्टम के अंदर इट्स नॉट इवन अ 5 to 7% ऑफ द होल ऑपरेशनल कॉस्ट। सो ये कॉस्ट बहुत मिनिमम है, और हम लोग इसको सही तरीके से एड्रेस करेंगे तो आई थिंक काफ़ी हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, और काफ़ी नंबर्स इसमें बढ़ेंगे ड्राइवर्स के। Ravikant, talking about the future, there's a lot of talk about alternate fuels. Electric vehicles are LNG, hydrogen. How can drivers be trained for these kind of vehicles? Does LSC have a plan for this? Yeah, so there is a government norm that we'll have to follow, that we'll have to revise our qualifications once in every two years. And the government has also brought in the perspective of what are the futuristic job roles that we'll have to create. So one of the initiative that we have taken, because as of now, till date, I would like to mention this on the stage, that Shriram has
sir has rightly brought it out. They have trained about 1,12,600 people in the last 4 years. And last year alone, they have trained about 40,000 people, plus 600 women, first-time drivers. So all these drivers will come back after 2 years. There's a possibility that they can come back after 2 years because we maintain a database that's there in the National Qualification Registry. The details are all recorded. So we have an option of calling them back to train them on the futuristic job roles. We are already on the job of creating that. So we already got that approved from the industries as well. Like we work with a lot of OEMs as well. We work with a lot of transportation companies. We got that approved as well. So maybe 2 years from now on, there's a possibility that we can call them back with the database which is available, with the help of Shriram again. I'm sure they will do it as well. So there's a possibility and we are on the job for that. I just want to add, the current syllabus also covers the current requirement. For example, if you're talking about electric vehicle or any upgrade or upscaling, that is already covered in the syllabus. What he mentioned is, going forward, the training is not one time. It is a repeat. So as and when the norms changes, as and when the requirement is there, the driver need to be trained. So we are ready and we are prepared for that. And one of the requirements of training is that you cannot just go on a theory session teaching all the drivers. You need to have simulators, you need to have real-time trucks to train them. So the simulators that we have for imparting training, we can actually, they are very advanced that we can have different modes of, we can convert them into different modes. I can have gear, gear shifting way of driving. I can have automatic driving. So all these things are already there in the place. It is available right now, as sir has said, but the requirement going forward might increase, for which we already geared up. Bala, infra is getting better, trucks are getting better. Do you see women drivers coming into this space, and will Shriram Finance be supporting the women drivers in a special way? Thank you. So, as our minister just mentioned, that there is basic infra is required, not only for the women driver, but normally when we go on a road trip also, when we go with our family, the basic requirement of restroom or place for parking is a big challenge in India. So I also see that the government is working, but the government alone cannot make these changes, is what I believe in. So when we talk about women driver, in a very small way, Shriram has been contributing to get into the equality of men and women. So a part of women empowerment, we also train women drivers. And we have already trained more than 1,300 women drivers for commercial vehicle alone. And we have chosen certain place where there is a environment where the support is being given from the local. Like for example, if we take Madhya Pradesh in Indore, we have trained almost 400 women. And we have also placed them, we have also given them livelihood. It is not just training them. So there are women who are single mother, who are divorced, and who are is a housemaid, who wants to become an entrepreneur, and we are helping them to make them eligible to drive and become independent. The first stage is to teach them driving. It's not a very one-day program or two-day program. It is almost 180 hours training, and that training is right from basics. We also teach them a lot of other skills, and then also on-road training is there. Almost in that 50% of 180 hours, we give them on-road training, apart from the stimulators and other things. So we have trained already, last year we have trained 600, almost 400 plus this year we have already trained. So we are planning to scale up to 3,000 this year. That is the plan for it. You spoke about facilities for drivers. दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था. एक लेडी ट्रांसपोर्टर थी, उसकी एक आदत है वो अपने ट्रक ड्राइवर्स के साथ वो निकल जाती है जर्नी पे. वो एक रेस्टोरेंट में रुकी, एक ढाबे पे रुकी. रेस्टोरेंट था जहाँ फैमिलीज भी थी. वो अपने ड्राइवर्स को लेके अंदर जा रही थी. उसको रोक दिया गया कि मैडम आप अंदर जा सकते हो, आपके ड्राइवर अंदर नहीं जा सकते हैं.
शी स्टूड हर ग्राउंड, शी फॉट एंड शी मेड श्योर कि ट्रक ड्राइवर भी उसी होटल में बैठ के खाना खाए बाकी लोगों के साथ। ये बहुत दुख की बात है कि आज के दिन भी हम ट्रक ड्राइवर्स को वो इज्जत नहीं दे पाते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। चिराग, आपके कंपनी में व्हाट इज़ द पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट फॉर ड्राइवर्स? जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे ड्राइवर कम्स फर्स्ट। इनफैक्ट हम काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स इसके ड्राइवर्स के लिए लेके आते हैं। जैसे कि चालक मालक मैंने आपको कहा, सो वी आर फोकसिंग मोर ऑन कन्वर्टिंग चालक्स इनटू मालक्स, बिकॉज ड्राइवर हम कहते हैं कि ड्राइवर हम है बिकॉज ऑफ ट्रक ड्राइवर्स, और वो मालक बनेगा तो कहीं ना कहीं मालक बन के हमारा पार्टनर बन रहा है। सो हमारे लिए ड्राइवर को पार्टनरशिप का रिस्पेक्ट है। वी काउंट सारथीज, वो हमारे पार्टनर्स हैं, और ये भी हमारा कोशिश होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम इसमें हमारे पार्टनर्स बनाएं, बिकॉज ड्राइवर्स है तो हम है। और जैसे मैंने कहा कि D2D पॉलिसी है कि ड्राइवर्स और डायरेक्टर्स हैव द सेम रिस्पेक्ट। और मैं खुद काफ़ी टाइम ड्राइवर्स के साथ खाना खाता हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर दिवाली में, सो आई वाज जस्ट टेकिंग अ राउंड एंड वो लोग कुछ खा रहे थे, तो आई एम अ वेजिटेरियन, सो मैंने बोला कि वेज बना रहे हो कि नहीं, बोला सर वेज है, तो मैंने मेरे लिए भी बनाओ। सो मैं उनके साथ भी खाता हूँ, वो भी हमारे यहाँ पे खाते हैं। जैसे आपको कहा कि वी हैव अराउंड 86 हब्स, तो हमारे हब में जब खाना बनता है तो मेरे लिए भी वही बनता है, मेरे स्टाफ के लिए भी वही बनता है, और ड्राइवर्स के लिए भी वही बनता है। सो वी डोंट डिस्क्रिमिनेट। इनफैक्ट हमारी कंपनी में SNGT में बहुत अलग तरीके से ड्राइवर्स को देखा जाता है। वी कॉल देम सारथी। ड्राइवर वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वरना वहाँ पे पायलट भाई या सारथी बुलाते हैं हम लोग। तो हमारे बीच रीमा भी है, हुज फ्रॉम रीमा ट्रांसपोर्ट। ये कंपनी 40 इयर्स प्लस से है, एंड इनके यहाँ भी चालक से मालक का जो कंसेप्ट है बहुत सालों से चला आ रहा है, मैं देख रहा हूँ उनको। बवाला, इफ वी हैड टू चेंज वन पॉलिसी विच वुड हेल्प अट्रैक्ट न्यू ड्राइवर्स, व्हाट कुड दैट बी? Simple, boss. We have to make them feel proud in whatever way possible. There are not one aspect which we can say. There are so many others. It's a basic ecosystem which we need to create so that the young drivers also feel proud to take this as a a job opportunity. Like Chirag has mentioned one of that. Instead of giving them 12,000 as salary and 2,000 per day bhatta and incentive, which actually accumulates to become 35-40,000. We should give them a respect of giving them a proper salary, because that bhatta was given because those days driving was very tough. You have to, vehicles were, geared one without AC, and so many others. Today the vehicles have become better, and they are going to be as good as driving a, Mercedes Benz or a BMW. So the best part is to give them the respect of giving them a better package, and like the corporate office gives, give them a facility where he can also see his future, like Chalak se Malak. Over a period of time, he can own the vehicle and attach it to the transportation and, become a proud owner. So it's not one aspect, it's a lot of other things which we need to do. दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है जब ट्रक ड्राइवर्स, मैं शायद 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कंपनी के ओनर्स जो थे वो ट्रक ड्राइवर्स को गालियाँ भी देते थे, मारते भी थे। वो भी एक टाइम था। आज के डेट में इतने स्मार्ट हो गए हैं वो, सैलरी 7 तारीख को ड्राइवर के अकाउंट में चले जाती है, लेकिन जो इंसेंटिव पार्ट होता है वो ड्राइवर के वाइफ या पेरेंट्स के पास जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ड्राइवर उस कंपनी में जुड़ा रहता है। वाइफ बोलती है इस कंपनी को नहीं छोड़ना है, मेरे घर पे भी कुछ आ रहा है। टाइम्स चेंज, पॉलिसीज चेंज। मिस्टर रविकांत, as a training institute, what changes would you like to see in the ecosystem that helps bring in new drivers? Because driver training is there, which is for, usually it's a refresher course. What about new talent? How do we get that? See, actually we are doing 3 things. One, we are bringing in freshers and getting them trained on LMV, and LMV to HMV, and HMV to specialization. So these are the 3 things that we are doing. Just let me add here, from LMV to HMV, how many actually drop out to going forward to HMV? See, our dropout ratio has been very low, less than about 2%, not beyond that. Because of the aspiration that's created, because we do a lot of counseling. And we have started creating a website for the drivers, which is Vishwa Bharat Sarthi, sort of, where
the employers, anybody wants to hire drivers, we fix a minimum salary that they can come in. If at all they want drivers, they'll have to pay about 40 to 50,000 rupees. So there are certain advantages that we give. And the major attractive component is the certificate, which is an NSQF level, National Skill Qualification Framework level certificate, which is a level 4 certificate, which is equivalent to a 12th standard as per a UGC notification. This driver can also, they also get an accident insurance policy with the certificate, which is given by the government. So there are a lot of benefits attached to the certificate. So this is well informed to the drivers who are coming in. We tell them, we do a lot of counseling in terms of what are the benefits of, what are the salaries that they get and all that. So these are some of the things that we do. But then yes, there has been a little lull in terms of somebody aspiring to become a driver. Hopefully that will change, at least for the qualification that they're getting, which is a 12th standard qualification. And thereby, now there is a UGC norm which gives credits. So 15 hours of education is equal to 1 credit, 30 hours of on-the-job training is equal to 1 credit, and 45 hours of real-time working is equal to 1 credit. So the 12th standard certification doesn't stop there. So as and when you keep driving more and more, your qualification also can be increasing from a 12th standard to a graduate, as and when you accumulate the credits by driving. So these are some of the things that we tell them to attract them to the profession as well. Well, friends, I just missed one part. yes. Sorry. So basically you asked me what will inspire somebody to become a truck driver. I would say in India, every human being who is born doesn't want to work for anyone. They want to become an entrepreneur. Ultimately, what we are creating is not driver. We want to make the driver a owner and ask him to own some vehicle and become an entrepreneur. Because a driver who owns a truck, he does multiple things. He is multitasking. He takes care of his insurance, he takes care of his EMI, he takes care of the RTO on the road, and then so many other things. So ultimately, we are not here to create drivers. We are here to create entrepreneurs. But the first step is, what he said is, we pick up people from the rural and make him a driver. And we give him, a complete idea. What we are giving is skilled driver. What today we see out of 1 crore 20 lakh vehicle driver who are on the road, 95% of the people, including me, we never went to the driving school to learn, right? We've just become. So the right and wrong, the defensive driving, in today what is required is what we are giving in the refresher course. But when we are training the freshers to become a driver, it's a complete, 360-degree training. So that helps him to decide, which includes financial inclusion, and he takes care of his, soft skill, etc., etc. So many other things. Thank you. Yes, Chirag, I fine. just Closing add remarks. to it, yeah. So, Bala sir, even my father was truck driver. So, मेरे पिताजी भी एक truck driver थे. So, जैसे सर ने कहा कि rightly said कि we have to get entrepreneurs over here. Truck drivers नहीं बनाना है. And I think this idea will actually bring a boom and will attract a lot of people in the industry. कि हम लोग यहाँ पे entrepreneurs को तैयार करें, truck drivers को तैयार नहीं करना है. जब हमारी ये सोच बदलेगी, तो ये industry पूरी transform हो जाएगी. And I'm very sure कि youth आ जाएगा. Friends, that was a wonderful panel. Thank you, Mr. Ravikant. Thank you, Bala. Thank you, Chirag. And friends, a wonderful audience. Thank you very much.